Okay, good morning everyone. Welcome to Daily News Analysis by Tathastu ICS. Today for 14th July 2026, we are going to see the topics that will reflect in our paper. ठीक है? Good morning Krishna, good morning Deepesh. ठीक है? चलिए, आज हम देखने वाले हैं 4 टॉपिक्स. ठीक है? इसके अलावा एक बार न्यूज़पेपर ग्लिम्स कर लेना. ठीक है, एक बार प्लीज डू रीड द न्यूज़पेपर अगेन एंड अगेन. आई एम एम्फसिसिंग ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर बिकॉज इट इज वेरी मच नीडेड. ठीक है, यू कैन नॉट स्किप दोस रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज अबाउट द सिटीजनशिप. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसका नाम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बोलते हैं. ठीक है, अभी रिसेंटली इट इज वर्किंग. गुड मॉर्निंग ओल्ड स्कूल, गुड मॉर्निंग रामकंत. ठीक है, so here that tribunal, okay, just that will be working for like ki इनका major role is to say that ki anybody is Indian citizen or foreigner. ठीक है, so right now they are sitting in Assam just because illegal migrant का problems वहाँ पर ज़्यादा है, so इसलिए. ठीक है, so now they have mentioned some individuals that they are foreigners. ठीक है, so Supreme Court have intervened and they have given their verdict and everything. They have given the directions that we are going to see in that case. ठीक है, so GS2 में हमारी without any confusion it is going to imply in our GS2 paper polity. ठीक है, चलिए the next one is about the retail inflation. अभी we know inflation का reason क्या है, मतलब क्या है, right? There will be a change in prices, the rise in the prices over a period of time, that is the inflation, right? So good morning Chandri, good morning Shanu. So वी आर गोइंग टू सी हमारी इन्फ्लेशन में. ठीक है, आरबीआई ने एक गुड मॉर्निंग भूषण, गुड मॉर्निंग शिवू. ठीक है, यस वी ऑल आर डूइंग गुड एंड होप यू ऑल ऑल्सो डूइंग गुड, राइट? आपका पढ़ाई भी ठीक होना चाहिए, राइट? चलिए, ठीक है, सो हमारी आरबीआई ने एक बैंड के अंदर इन्फ्लेशन का रेट फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस है उसमें. अराउंड लाइक 0.4% वी गॉट द इंक्रीज इन्फ्लेशन. ठीक है, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ like food, goods and everything. ठीक है, so that we are going to see. So this will be impacting in our GS3 paper. So mostly it is of prelims facts only. ठीक है, not much about it. ठीक है, so the third one is about the courts accountability. Okay, so courts accountability, this editorial particularly talking about, okay, the Supreme Court's like accountability in the when it comes to the electoral roll process and everything. ठीक है, to in in like into withholding, okay, upholding the its executive and the judiciary process. Okay, and along with that it have to keep that in mind, their role. ठीक है, so it should not be taking the administrator role. English would be okay. चलिए, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश के लिए. ठीक है, so that is what the major thing is about. ठीक है, so देखो, this opinion is basically on थोड़ा सा criticisms है and you can use this arguments for reflecting in your paper where the judiciary arguments were going on. You cannot directly use this, but instead you can get an idea about it. ठीक है, ठीक है, GS2 again. Then the fourth one is about India's nuclear power. ठीक है, so अभी this editorial is talking about जैसे कि हमें सेल्फ रेसिलियंट हो गया है कुछ चीजों में. ठीक है, the same kind of thing now we have to, like, instead of being a consumer for nuclear power, we have to focus upon like developing the nuclear reactors and things. ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. So this is basically about, we are going to see certain history about it. Okay, न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया में कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ छोटा सा हिस्ट्री हम देखेंगे. और इसके अलावा वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, so what are all the opinions that have been the author said. We are not going on the side of authors, but instead we are going to see the certain facts. ठीक है, चलिए आज का हम देख लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक. चलिए, so the first one is about citizenship decisions must be fair, recent. So you can see here, right? चलिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक हमारी सिटीजनशिप
बता कर लिया, right? They have informed about the citizenship, right? So as I have told you, in the foreigners tribunal which have been formed, okay, and it is right now active in Assam area because illegal migrant का issues वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. So they have been set up there right now, and they are like based upon the documentation, based upon their like generation details and everything, they will be announcing like who is Indian citizen and who is foreigners. ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये भी याद रख लीजिए, प्रिलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है. चलिए, सो व्हाट दे हैव डिड इज लाइक सम ऑफ द इंडिविजुअल्स को उन्होंने बता दिया. दे हैव टोल्ड दैट, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र. So they have told that some of the individuals, just because they didn't appear in the tribunal, they have termed as foreigners. Okay, so which is there will be considering them as a foreigners, it is a huge difference, it will make huge difference in their life. First, voting rights नहीं होगा उनके पास, ठीक है, और इसके अलावा they will not be having all those protections that Indian citizens will be having, okay, and along with that they will be losing their livelihood and they will be losing their property also, okay. So considering someone as a foreigner or declaring someone as a foreigner, it has a huge impacts, okay. It is not about they will not be having a proper citizenship, and they have to be excluded also. They might be separated from the family as well. So all these dimensions are happening when they are not being termed as Indian citizens. Clear till now? So Supreme Court have intervened. Good morning, Gautam. Supreme Court have intervened, and they have told that ki, see, if you are considering the citizenship, that should be having a proper reason, the fairness should be maintained, and it should not be violating any equality rights of the citizens. Okay, so if you have, okay, if you have considered somebody as a majorly as foreigner and everything, these are the rights that you will be violating. Okay, so violated. So these are the things that they have talked about. The पीछे यही है पूरा फैक्ट्स, ठीक है. सो इसके अलावा यू डोंट वांट टू रीड अबाउट दिस, कौन सा बेंच ने किया है, क्या है, ये इतना तो हमें जानने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है. यू नीड ओनली द जजमेंट्स, यू डोंट नीड टू रीड ऑल दोस लाइक बेंच में कौन कौन है, उसका जरूरत ज्यादातर है नहीं, ठीक है. सो fair opportunity, a state action which is arbitrary cannot claim the protection of law merely because it is clothed in statutory form. So statutory form, the state have been above the head. Bhushan, maybe it is because of the like English that I have used or something. थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ आएंगे, ठीक है. चलिए, the proceeding which may result in person being declared as foreigner cannot be sustained if the procedure adopted is mechanical and one sided, ठीक है. सो यहाँ पर fairness और इसके अलावा गुड मॉर्निंग चावी. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हमारी प्रोसीजर्स जो भी वो सिटीजनशिप व्हेन इट कम्स टू द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स प्रोसेस, ओके, कंसिडरिंग verification, verifying their documents, okay, along with that all those procedures have to be like complete in a mechanical way, and it should not be one sided, ठीक है. that is what they are talking about here. चलिए, so the tribunal must examine whether the person had a fair opportunity, whether the main grounds were disclosed, whether the evidence before it was capable of supporting the reference, and whether the conclusion follows from the material on record it added. So here they are talking about, so just because they are not appearing into the tribunal for the time being, so you cannot all of a sudden consider them as a foreigner. You have to give them the equal opportunity, enough opportunity to prove their like documentations, and for all those procedures you have to go for the time, okay. So that is what majorly they have talked about it. So however clarified that the remand should not be construed as an affirmation of the appellant's claim to Indian citizenship. So they have to like they have to prove their citizenships, and for that we have to give, just take a minute, as a क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेजरली ये आएंगे कि ऑन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, उनका प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉडी, प्रीलिम्स में वो आ सकते हैं, और दूसरी चीज प्रोसीजर्स, ठीक है, याद रख लीजिए. चलिए,
The next one is about the retail inflation climbs past RBI target to 4.4%. So if you see here, हमारी RBI के लिए, okay, to maintain the liquidity, first thing, ठीक है, to maintain the liquidity, there are certain mechanisms that is being taken care by who, the RBI, ठीक है. लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी को और मॉनेटरी पॉलिसी को इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट करते जाते हैं, ठीक है. वन अमंग दैट इज, ठीक है, so RBI will be like altering its, to control the inflation, one of the mechanism is to like change the repo rate, ठीक है. So I'll be coming to first repo rate का थोड़ा सा introduction दे देती हूँ, फिर हम in a procedure we will be going, ठीक है. So रेपो रेट मतलब क्या है, आरबीआई एक मैकेनिज्म यूज करते हैं. आरबीआई अपने पास जो भी वो अमाउंट्स है कमर्शियल बैंक्स को दे देते हैं. इन रिटर्न कमर्शियल बैंक्स विल बी गिविंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. उसका इंटरेस्ट रेट, द कमर्शियल शॉर्ट टर्म अमाउंट, द शॉर्ट टर्म अमाउंट विल बी गिवन बाय द आरबीआई टू commercial banks. Okay, commercial bank in return they will be like pledging their government securities. उसके लिए the commercial bank will be paying the interest to RBI, right? So the interest rate that is being paid by commercial banks is called as a repo rate, that has been fixed by RBI. Okay, so whenever there is a inflation and whenever they want to control the money supply or the liquidity in the market, in the economy, RBI will be one of the step where RBI will be going for changing the repo rate. अभी आ जाते हैं, ये समझ आ गया ना. अभी आ जाते हैं इन्फ्लेशन मतलब क्या है, ठीक है. सो इन्फ्लेशन is nothing but change in the price, which is rise in the price, ठीक है. so अगर मैं एक लैपटॉप इस साल खरीद रहे हैं तो okay, if I'm buying any laptop this year, it is around 60,000. okay, the same laptop, okay, the next time with little more additional things it may be in the higher prices. okay, so it will be like 62,000 or 63,000 like that. so the change in the prices, which is higher prices, will be considered as inflation. Same quantity and same kind of a product, but it will be costlier than earlier. okay, so that is what the inflation is. clear अभी तक? चलिए. so ये inflation में दिक्कत क्या आ जाता है, when there is a higher inflation everything will become expensive and the money, like money value will be depreciating in the global wise, and along with that for small like for even a small quantity of a product you will be paying huge amount. okay, that is what inflation. and eventually if it is huge, okay, if the inflation is huge, it will dooming our economy. ठीक है, so ये समझ आया. so क्या करना है, ये इन्फ्लेशन को आरबीआई ने रख दिया है 2% से 6% तक अगर होंगे तो इट इज अ वेरी फीसिबल वन. अगर इस बैंड के बीच में होंगे तो इट इज वेरी गुड. ठीक है, सो हाउ इन्फ्लेशन विल बी कैलकुलेटेड, अभी रिसेंटली वी हैव चेंज्ड द बेस ईयर ऑफ सीपीआई थ्रू वन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन इज सीपीआई. ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, सॉरी प्राइस इंडेक्स से हमें क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं. फूड का, गुड्स का, सर्विसेज का, सबका वी विल बी लाइक able to see what how the prices have been changed. ठीक है, so अभी क्या हो गया है, ideally this is our range, right, 2% to 6%, but the RBI have fixed if we are in the 4%, that is good. Around May we were having like 3.9%, okay, 3.93% around May 2026, but after revision of certain things, okay, the CPI and everything, so now we are able to see our inflation rate have gone till 4.4%, which is 0.4% being increased than the फिक्स्ड वन. ओके, हमें 4% के लिए फिक्स किया था लेकिन 0.4% ज्यादा हो गया है. सो इट इज द नेसेसरी स्टेप टू बी टेकन बाय द आरबीआई कि अभी हमारे पास वो 0.4% इंक्रीज है, सो दैट विल बी क्रिएटिंग ए नेक्सस. ठीक है, सो उसके लिए
इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर सम मैकेनिज्म्स एज लाइक इंक्रीजिंग द रेपो रेट. ओके, सो लिक्विडिटी को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएंगे. Super, ma'am. Shivu, I'll recommend Hindu newspaper. If you are a beginner, you can go for Indian Express as well. No, इसमें मना नहीं है, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा इन दोनों को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए, इधर हिंदू न्यूज़पेपर और एल्स द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है. उसके लिए थोड़ा सा दे हैव द बाइफर्केशंस, ठीक है. उनके लिए there are certain things, okay, as it is they will not be giving the citizenship. There are certain procedures for that, ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ, ठीक है. चलिए, सो अभी 0.4% हमारी इंक्रीज हो गया है. सो रीजन बिहाइंड ऑल दोज इंक्रीज इज अबाउट, ठीक है, हमारी वेस्ट एशिया में जो भी दिक्कत आए हैं, that is one of the thing, and geopolitically जो भी changes होते जा रहे हैं, that is one of a major thing. So because of that the food prices have been increased, and also the oil prices and the fuel prices have been increased. All those are the factors that have been like created all these things, ठीक है. अभी weekend monsoon and also the very because of El Nino we are getting very weekend monsoons, right, also, right. So that is what the major thing that has been impacted. So food security भी हमारे पास थोड़ा सा consideration में है. And fertilizers we all know, right. So production of fertilizers also have been gone little challenging when it comes to the West Asian conflicts, right. So these are the factors that have been pushed our 4% fixed inflation to 4.4%. But still RBI is very cool क्योंकि still we are having the buffer of till 6 we can manage it. If it is beyond 6, then it will be definitely a huge issue. But even this small changes also, even this small price rise also we have to take in into the consideration. अगर हम इसको छोड़ देंगे तो, अगर we are skipping it for right now, it may end up in a very huge changes, ठीक है. समझ आया अभी तक. So यहाँ पर India's retail inflation has crossed the Reserve Bank of India's 4% target for the first time since January 2025. ठीक है, touching 4.4% in June, it stood 3.93% in May. ठीक है. Inflation as measured by the new series. New series क्या है, हमारी वो CPI में पहले बेस ईयर क्या था, and we have included lot of baskets also in CPI this time. There earlier it was very few baskets in CPI, but now considering all those changes, ठीक है, 2011-12 था उस टाइम बेस ईयर, उसी हिसाब से हमने गुड्स एंड सर्विसेज को हमने बाइफर्केट कर लिया. बट नाउ आफ्टर चेंजिंग आफ्टर द कोविड टाइम, राइट, in 2022 to 23 we have changed the base year, and now we are having different and multiple baskets, ठीक है. so उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारी CPI के थ्रू न्यू सीरीज के थ्रू what happened is we had a food and fuel prices have been increased, okay, because of crisis in West Asia majorly, ठीक है. weaker than normal monsoon, food inflation अभी 5%, 5.05% हो गया है. एंड फ्यूल इट वाज लाइक 1. transport segment it was like earlier 1.7%, but now it have been raised for 4.3%. so these are the major changes that the Indian economy have gone through, ठीक है. so as I have told you, it is not only about the West Asian conflict, it is also about the uneven monsoon, ठीक है. so on the domestic front, food inflation has remained a key driver due to weather related disruption. so हमें यहाँ पर क्या करना है, what could be the solution, ठीक है. वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के वजह अगर आ रहे हैं तो what could be the solution? one thing, we can like go for organic farming, or else we can produce fertilizers, or we can go with the cleaner energy which will be helping us to produce the energy and also these fertilizers and things. We can even diversify our like resources, right, from different countries we can get it. That is one point of thing. But when it comes to the agricultural output, due to the monsoon
issues. At that time, what we have to do, when it is a climate oriented things, we have to go for climate smart farming, which is like when we have to anticipate the rainfall and we have to measure like how much rainfall will be coming up, and we have to plan the crop accordingly, and multiple crops at one. Okay, sure, take it. So at multiple crops and feasible crops, by understanding the agriculture, we have to go for the smart farming. Okay, climate smart farming is very much important. Keep that word in mind. It is a keyword. Okay, so uneven monsoon distribution across certain regions, Mr. Rati said. Aditi Nair at ICRA said retail food prices have continued to harden in July too. So यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं. We will be seeing it. ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक? चलिए द नेक्स्ट वन. अभी तक कोई भी डाउट है? इफ देर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. मेजरली यू हैव टू कीप दैट इन माइंड की आरबीआई का मेथड्स क्या है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, एंड इसके अलावा हमारी इन्फ्लेशन बैंड क्या है 2% to 6%, एंड व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स दैट इज बीन लाइक फैक्टर्स यू कैन यूज इन द मेंस पेपर. ठीक है, GS3 में, GS2 में यू कैन यूज इट. क्लियर? चलिए GS2 में नहीं, GS3 में. ठीक है, so holding the court accountable amid democratic strain. So as I have told you in the introduction itself, एक चीज आप याद रख लेना, it is majorly of criticism about the things. So what we have to do is, instead of keeping all those things within us, we are just going to take the arguments that have been talked about. ठीक है, clear till now? Is there is any doubt? So this holding the court accountable amid democratic strain. So हमें पता है democracy is the major like one of the basic structure of हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो ये मेजर है, एंड ये केशव नंदा भारती केस में ही लाइक अपहोल्ड भी कर लिया, राइट. एंड इसके अलावा दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट मेजरली, ओके. सो सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू बी, ओके, Supreme Court is supposed to be one body or one organ where they should not be acting as an administrator. They have to be upheld whenever it is needed, and when the interventions of Supreme Court have to be taken into the consideration. Okay, so it is needed whenever, because this majorly talking about our SIR process. ठीक है, the special intensive revisal of the electoral rolls and everything. So that is what they are completely talking about it. ठीक है, so here again I'm emphasizing on it. Please don't reflect these statements in your answers. It is just for your understanding. Clear? चलिए हम पहले देख लेते हैं. So special intensive revision of electoral rolls is exclusionary, and that the framework is burdensome for ordinary citizens. First concern, ठीक है. For ordinary citizens, the opposition's letter is also a gesture of desperation and disappointment over the Supreme Court of India's refusal to interfere with the massive and continuous de-enfranchisement. ठीक है, सो मेजर थिंग यहाँ पर क्रिटिसिज्म में इन्होंने क्या क्या बोला है. पहले तीन चीज है. पहले चीज, इट इज अ बर्डनसम डॉक्यूमेंट, सिटीजनशिप को प्रूव करना और अपना नाम वो इलेक्टोरल रोल्स पे. ठीक है, वोटिंग राइट्स इज ओके, दैट इज बेसिक थिंग फॉर इंडियन सिटीजन्स. डेमोक्रेसी उसी के थ्रू ही विथस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, एंड इसके अलावा इसका कोर कॉन्सेप्ट इज अबाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द कैंडिडेट्स हु आर रिप्रेजेंटिंग, एंड ऑल्सो लाइक इट इज वेरी कोर वॉइस ऑफ द डेमोक्रेसी. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द वोटिंग राइट्स. अगर आप वोटिंग का ही बेसिक डेमोक्रेसी राइट्स के लिए भी, if you wanted to like present so much of documents, if you have to be going through so much of scrutiny, it is creating a burdensome on the people. ठीक है, ये first thing. Second thing, it is about the majorly conditional हो गया हमारी rights. ठीक है, समझ आ रहा है ना. सो हमारी बेसिक राइट्स वो भी कंडीशनल हो गया है. इट इज अफेक्टिंग अबाउट द पीपल हु आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओके, एंड ऑल्सो द पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज मेकिंग वेरी वल्नरेबल फॉर लाइक मिसिंग आउट देयर अपॉर्चुनिटी टू वोट. ठीक है, सो ये दीज आर द मेजर थिंग people faced because of SIR, right?
So court was, what is the supposed role of court in this case is, like it is supposed to, okay, this Supreme Court is supposed to be like intervened in this, and they should be asking about, okay, they should be asking about the election commission. See, what you are doing, that is not right. You have to just go with the process that is feasible for everybody. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में exclusion should not be happened when it comes to the electoral rolls, particularly article 325 says that only, ठीक है. Exclusion should not be there based upon caste, gender, okay, religion. इसके दूर से हमें करना पड़ेगा बस, ठीक है, समझ आया. So the thing is, like, exclusion should not be happened, but because in the SIR process major of the voters have been excluded without, irrespective of their, like, without any proper reason, they have been like eliminated, right, from the electoral roll. So that is a major thing where many people denied with the constitutional rights and sorry, the legal right of voting, right. So that is what the major concern they have talked about. So at that time, what the Supreme Court is supposed to do when people are losing their voting rights, it is kind of a weakening the democracy. So to uphold the democracy, Supreme Court have intervened at the first, बट इंस्टेड व्हाट इट हैव हैपेंड इज, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आया, जब वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस सब कुछ हो चुका है, इलेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट हैव टेकन टू द come into the limelight and they have said like election commission जो कर रहा है उनको करने दो, right. This is one criticism about that. And also it is not the first time, it is in the CAA and many other things it have been happened like this only. So Supreme Court is playing a administrator role. After all the executive process have been done, then only Supreme Court is interfering in the like concerns, ठीक है. So that is what one of the major criticism, ठीक है. पहले ये burdensome documentation है, दूसरा Supreme Court is becoming very playing a very administrative role, ठीक है. And the third one is about as I have told you, conditional हो गया हमारी right to vote, and that is becoming very huge burden on people, ठीक है. So there is a lot of miss out, there is a lot of people who are losing their opportunity to participate in the this voting process. समझ आ रहा है? These are the three major concerns that they have talked about it. We will be discussing one by one, ठीक है. चलिए, so इसके अलावा the erosion of the right to vote, ठीक है. So Molika Banerjee narrates various encounters with poor ordinary voters. Miss Banerjee in the book of Why India Votes, okay, referring to Krishnamurti's study, cites an incident. A woman named Rukmini Bai was unable to vote in the elections for lack of proper identification documents. एक ठीक है. So they have talked about incident which have been mentioned in the book, ठीक है. ये पहले चीज, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट, ठीक है. आपका ये एक कोट मिलेगा, यू कैन यूज दिस ऑल बुक नेम इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है. चलिए, सो this is a major thing, sorry, this is one of a thing that you just can skim it, ठीक है. and उसमें क्या हो गया, रुक्मिणी एक लड़की है और एक लेडी है जिनको एक्चुअली क्या नहीं मिला है, वोटिंग राइट्स मिला है बिकॉज ऑफ द पुअर डॉक्यूमेंटेशन थिंग्स, ठीक है. so this is one of a thing, but at least they should have given that kind of a thing कि the time period or any flexibility so that she can arrange for the document and then she can participate in the election process, but voting process, but she couldn't do that. So ठीक है. so it is not much. What the SIR access initiated by the Election Commission of India has done is to poke at heart of this electoral enfranchisement. The modalities in which the ECA has invoked this process are also significant. The ECA has been successful in creating an atmosphere of anxiety for citizens in a matter closely tied to their political identity. So one thing here they are talking about is, due to the burdensome of the documents and all those things, it have created a lot of fear of missing out, ठीक है. so fear of missing out here is about like अगर आज मेरा नाम वो electoral roll पे नहीं है, ठीक है, because it can be eliminated because of duplicacy or anything else, but मेरा नाम कहीं भी नहीं है, I'm not able to vote in the that constituency, right.
So what it is creating, it is creating anxiety among people about their political identity. ठीक है, अगर मेरी नाम इस बार नहीं है, अगले बार भी नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम ही मुझे नहीं मिल रहा है, तो आई कैन नॉट प्रूव माई लाइक डॉक्यूमेंटेशन, राइट. सो अगर वो नहीं हो रहा है, देन आई विल बी completely eliminated from my election, like electoral rolls, where I will be losing my political identity, right. So this is one of a thing. There are many articles that have been uh, like tangled with this. Okay, article 324, 325, 326, okay, universal adult franchise and everything, along with that article 19(1) subclause a also, right. So वहाँ पर क्या होगा आपको, you have to be well informed about your representatives. Okay, so all these things are been entangled. Please do read about it, you will get an idea. वो articles यहाँ पर mentioned नहीं है, but when you are reading completely, you will be getting an idea about it. ठीक है, this is the first thing, burdensome of documents. First thing. Second thing, the role of the court. When the basic structure of democracy is directly attacked by the executive, the kind of response by the court, a counter majoritarian institution, deserves serious study. Okay, so here they are talking about what, the administrator role that have been played by Supreme Court. Okay, it is a criticism where, like, instead of interfering at the first instance of any event, instead of that, the Supreme Court is going for, after all the executive process has been done, so at that time they are doing it. Okay, they are intervening. So they have talked about that only. ठीक है. So the Bihar SAR case was adjudicated by the bench led by CJI. Okay, however this decision came long after the election was over, which I have told you. ये इवेंट के पहले और बीच में नहीं है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया बिहार में जो SAR प्रोसेस में n नंबर ऑफ एलिमिनेशंस वेर गोइंग ऑन. ठीक है, ये पहले चीज है. इसके अलावा दो और एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं. एक तो डिमोनेटाइजेशन का है, ठीक है, एंड डिमोनेटाइजेशन को ऑल ऑफ अ सडन वी हैव डिड इट, राइट. सो उसका चैलेंजिंग केस था एक. सो उसमें भी आफ्टर ऑल द थिंग्स हैव बीन डन एंड सेटल्ड, उसी टाइम ही सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया एंड दे हैव टोल्ड दैट व्हाट एवर द एग्जीक्यूटिव हैव डिड, that is feasible, and it have uphold that verdict. ठीक है. So and also the 370, article 370, where the status of Jammu and Kashmir have been the special status of Jammu and Kashmir have been aborted. ठीक है, and abrogation. ठीक है, and the these are the three examples that have been quoted where the Supreme Court have acted as a like administrator. It is a part of it, have been replicating the executive methodologies. ठीक है, instead they have to intervene and they have to question, but they didn't do that, but instead they have withstand with the executive part. ठीक है, so these are the criticisms that they have talked about it. Just read, nothing much into it. ठीक है, because I have told you, एक बार पढ़ लेना, आर्ग्यूमेंट्स को समझ लेना, बाकी सारा you cannot use it in the paper. Clear till now? चलिए. So the next one is about, okay, ज़्यादा सा पेपर वर्क है, judicial accountability. So here they are talking about what kind of accountability the judiciary should be taking care of. ठीक है. So transform judicial review itself from a limiting device to yet another instrument for furnishing the ideological legitimacy to the government's action. So जो भी government action ले रहे हैं उसका इन लोगों ने like they are withstanding with those ideologies. ठीक है. The Indian Supreme Court is one of the most powerful institutions in the world. Many decisions of the court seemingly involving legal questions are essentially political questions. Therefore, it is necessary for the political opposition to evaluate and criticize the fundamental aberrations in the judicial realm. This is part and parcel of the function of the opposition. In today's critical times, manufacturing endorsements to support continuing executive excesses is symptomatic of any authoritarian regime. So it is kind of थोड़ा सा hard statement है, but just इसका क्रक्स ये है, तीन ही पार्टियां, ये इलेक्शन प्रोसेस का जो भी है डॉक्यूमेंटेशन बर्डनसम है, वो सुप्रीम कोर्ट वहां पर इसको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए था, लेकिन दे हैव एक्टेड पोस्ट द इवेंट हैव बीन हैपेंड, सो देयर इज
there is no particular thing, ठीक है. It created the fear and the anxiety of the people, among the people, for losing their political identity. ये दूसरी चीज है. और तीसरी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन्होंने परफॉर्म किया है, एंड पीपल आर द डेमोक्रेसी विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बीन वीकनिंग बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल रिविजन प्रोसेस स्क्रूटिनी. ओके, इलेक्टोरल प्रोसेस में दिक्कत नहीं है, बट द वे दे हैव डिड इट दैट इज द मेजर इशू. ठीक है, समझ आ रहा है. सो दिस आर द क्रक्स ऑफ इट. ठीक है, दीज 3 इश्यूज है. सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी क्रिटिसिज्म्स है वो आप एक बार पढ़ लेना. एंड द आर्टिकल्स 324, 325, 326, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, all these things are very much important. ठीक है, please do read about it. चलिए, shall we go for the next one? The right path for India's nuclear power development. So here अभी क्या हो गया, 2047 में we are supposed to create like 100 gigawatts of electricity from nuclear power only. ठीक है, so अगर आप देखेंगे इंडिया में न्यूक्लियर पावर कैसे आए हैं, पहले चीज, ठीक है, 1974. ठीक है, उस टाइम तो हमारी पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह हुआ था, टेस्टिंग हुआ था. सो उसके बारे में हमें सैंक्शंस बहुत ज्यादा मिला, राइट. सो इसके बाद क्या हो गया, ग्लिम्स ऑफ इट. ठीक है, 2008 में विथ डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड एवरीथिंग यूएस के साथ हमने किया. सो दे हैव जस्ट गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम. ठीक है, सो आप सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए काम कर सकते हैं. यू कैन बाय द यूरेनियम फॉर दैट, यू कैन इंपोर्ट द यूरेनियम फॉर दैट, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम है नहीं. वी हैव अबंडेंस अमाउंट ऑफ थोरियम विच इज 25% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स आर देयर ऑफ थोरियम इज प्रेजेंट इन इंडिया. लेकिन थोरियम को आप एज सच यू कैन नॉट यूज इट, यू हैव टू प्रोसेस देम. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो. ठीक है, सो उसको प्रोसेस करके इसके बाद ही हमें क्या कर सकते हैं, आफ्टर दैट ओनली वी कैन यूज इट फॉर द like we can transform thorium into uranium and we can use that uranium into the nuclear reactors. ठीक है, so 2008 में हमें ये मिला है, सिविलियन प्रोसेस के लिए यू कैन यूज इट, यू कैन इंपोर्ट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. बट द प्रॉब्लम इज अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स हो जाते हैं. ठीक है, fast breeder reactors, pressurized heavy water reactors, like small module reactors, and light water reactors. All these things are different kinds of reactors. So India में अभी we have pressurized heavy water reactors. ठीक है, and the globe is around us. Okay, the globe around us are trying to go for what? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. क्यों स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, वो भी हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे. ठीक है, when you will read about Mr. Bhushan, so far whatever you have given the comments, it is not actually relevant to the things. ठीक है, let's keep the doubts and the comments which is related to the things. Okay, in case if you have any doubt regarding the articles and everything, you can text us. Otherwise please don't spam the chat box. ठीक है, clear. चलिए, सो अभी 2008 में इन्होंने ये बोल दिया है. गुड मॉर्निंग विशाल. सो इन्होंने बता दिया like US have gone with us and they have told that कि please don't go for the like उन्होंने order ही कर दिया obviously, civil nuclear reactors you can go for it, but you cannot go for the nuclear weapons. But we have tested 2 Pokhrons, right? One is Smiling Buddha and also Operation Shakti, if you could remember. ठीक है, so ये हमें टेस्ट कर लिया and we are like न्यूक्लियर वेपन स्टेट. इंडिया अपने आप अनाउंस कर लिया है, राइट. एंड उसके अलावा क्या हो गया, स्टिल द सैंक्शंस हैव बीन फ्लेक्सिबलाइज्ड. ओके, ज्यादा सैंक्शंस नहीं है, फ्लेक्सिबल है, बट स्टिल वी आर लाइक वी आर नॉट गोइंग टू अटैक समबडी फर्स्ट, राइट. न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी तो हमने साइन नहीं किया है. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, याद रख लेना. इसलिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स भी हमारे पास बहुत 1975 में, हमारे 1974 में टेस्ट करने के बाद ही 1975 में क्या हो गया था, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स लाइक यूएस, रशिया, यूरोप, जापान, all these people, what happened, they have stopped, like they have
created a sanction that India will not be getting any reactors or uranium supply for their weapons. ठीक है, so ये हुआ था, but later on 2008 में बराक ओबामा पीरियड में भी हमें क्या मिला, थोड़ा सा sanctions मतलब flexibilities भी मिला है. So right now what we are focusing on, we are not focusing upon creating the nuclear weapons. ठीक है, instead right now we are focusing upon the energy production, energy manufacturing through the nuclear reactors. ठीक है, so nuclear reactors में प्रॉब्लम ये है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो वी कैन नॉट इम्पोर्ट इट इन अ लार्जर एरिया. ठीक है, एंड इसके अलावा इट विल बी अ डुअल बर्डन फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू द यूरेनियम परचेज ऑल्सो, क्योंकि यूरेनियम इंडिया में है नहीं, इंस्टेड वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड ओनली. सो दिस इज द मेजर इशू दैट वी आर फेसिंग. सो व्हाट दिस एडिटोरियल, द एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट, सी India right now is having a better state. So instead of going and purchasing the nuclear reactors, instead we have to go for what? The self-designed and self-manufactured things. So अभी क्या करना है, हमारी जैसे pressurized heavy waters reactors है, it is indigenously we have designed, okay, and developed, tested, and along with that हम manufacture भी कर रहे हैं. So we have 3 stages of nuclear reactors, right? So first stage में क्या होगा, we will be like पहले जो भी है फ्यूल दैट वी आर गिविंग, ठीक है, उसके हिसाब से हम प्लूटोनियम निकाल देते हैं. सेकेंड स्टेज में वो प्लूटोनियम को हम थोरियम करते हैं. सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है, बहुत अच्छा चीज है, अगर आप इफ यू आर गिविंग 10% ऑफ द प्लूटोनियम एज अ फ्यूल for creating the energy, what it will be doing, like with that 10% it will be giving you around 50-60% of एनर्जी आउटकम विच इज द थोरियम विल बी गिवन बैक. ठीक है, सो वहां पर वो थोरियम को यूज करके यू कैन सिक्योर, लाइक यू कैन प्रोड्यूस द यूरेनियम 233. ठीक है, सो विद दैट क्रिएटेड यूरेनियम, ओके, uranium 233 you would be able to, okay, you would be able to go for you can प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दिस इज द मेजर थिंग. 3 स्टेजेस में यही आपका हो जाता है. ठीक है, सो प्लूटोनियम मिलेगा, प्लूटोनियम से आप थोरियम ऐड करके, थोरियम से यू विल बी क्रिएटिंग द यूरेनियम 233 विच यू कैन यूज इट फॉर योर एनर्जी प्रोडक्शन. सो अभी इसी 3 स्टेजेस में हमें क्या मिल जाएगा, सो इसी 3 स्टेजेस में हमें मिल रहे हैं, तो यूरेनियम भी हमारे पास मिल गए हैं, और इसके अलावा एज वी हैव डेवलप्ड एंड एज वी हैव लाइक डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑल दोज रिएक्टर्स, वी कैन गो फॉर द सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीजर्स. ठीक है, समझ आ रहा है. ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, बिग बिग लाइक कंपनीज में यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड वी कैन यूज इट फॉर एआई डेटा सेंटर्स ऑल्सो विच नीड ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट, राइट. सो वहां पर भी इनका न्यूक्लियर पावर का हम दे सकते हैं, और इसके अलावा ह्यूज इंडस्ट्रियल एरियाज में हम ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो द वन बिगर थिंग दैट वी हैव टू फोकस हियर इज, एज आई हैव टोल्ड यू, ग्लोबली अराउंड अस. ठीक है, ग्लोबली अराउंड अस स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स को उन लोगों ने यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज एफिशिएंट. ठीक है, एंड ऑल्सो हमारी इंडिया की इंडिजिनस जो भी वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है, दे आर बिल्ट इंडिजिनसली एट द लोअर कॉस्ट. ठीक है, लोअर कॉस्ट कैसे है, थोरियम हमारे पास है, उसका हम यूज करेंगे, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल लेंगे और यूरेनियम भी हमें मिल जाएंगे, राइट. सो इट इज अ लो कॉस्ट डिजाइंड टेक्नोलॉजी है, राइट. सो बिकॉज व्हाई वी हैव गो फॉर इट, क्योंकि देखो उस टाइम ऐसा आई हैव टोल्ड यू, हमारे 1948 जो भी वो पोखरण टेस्ट दो भी हो गया है, इसके बाद सैंक्शंस ज़्यादा मिला है. सो एट दैट टाइम, ओके, इसके पहले ही ये एक आइडिया था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी तो होना ही चाहिए. सो उस टाइम क्या हो गया, देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल्सो लाइक आई विल टेल यू द नेम, ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल्सो हमारी इंडियाज न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फादर का नाम है होमोय जे बाबा, ठीक, राइट. सो उनका क्या हो गया, उस टाइम उन्होंने वो रिएक्टर्स डिजाइन किया था, एंड ही हैव स्टार्टेड लाइक उसका वर्किंग मॉडल भी बहुत अच्छा चल रहा था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट क्रिएटेड, क्योंकि लो कॉस्ट हमें इसलिए रख दिया ताकि विथ
the enrichments that we have, okay, with the things that we have, like thorium and things, we can use those reactors for further production, ठीक है. So इसके बाद ही हमारी पोखरण टेस्ट वगैरह, उससे थ्रू ही हमारी पोखरण टेस्ट वगैरह हो गया है. एंड as I have told you, अभी तक sanctions में हमारी enrichment वाला यूरेनियम नहीं मिलेगा, क्योंकि enrichment uranium it will be used only in the nuclear weapons. Instead we are getting the uranium for the civilian nuclear programs only. ये याद रख लेना आप, ठीक है, समझ आ रहा है चीज. सो यहाँ पर with that low cost reactors, now we are going for the electricity programs and everything. But the major thing here is about globally they are going for small module reactors, and India may be, okay, get into the trap where this where the India maybe get into the trap where the small modular reactors will be, these companies will be coming here and they will be setting up the industries for the production. And उसी हिसाब से we may be facing so many issues, ठीक है. First thing is about the safety, second thing is about they will be coming, they will be researching and they will be using all our resources खत्म हो जाएगा, ठीक है. रिसोर्सेज के अलावा इट विल बी, दे विल नॉट बी गिविंग अस अ कॉम्प्लीमेंट टू अस, ओके, द रिएक्टर्स को हमें नहीं देंगे, इंस्टेड दे विल बी सेलिंग इट आउटसाइड. सो रिसोर्सेज हमारी हैं, ओके, और इसके अलावा इट शुड नॉट, इंडिया शुड नॉट बिकम द टेस्टिंग एरिया फॉर द ग्लोबल कंट्रीज. दैट इज व्हाट द मेजर कंसर्न दैट वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है. अभी तक समझ आ रहा है ना. so that is what they have talked about it. So with all these things, India should go for the small modular reactors production, where indigenously we have to go for it, and along with that we have to achieve that, like 2047 में we will be getting 100 gigawatt power from nuclear reactors only. Small modular से हमें 50 से 300 gigawatt तक power हमें generate कर सकते हैं, and it is very efficient and it is having very low cost also, ठीक है, comparatively. So that is why we are going for this. अगर आप देखेंगे तो as I have mentioned you, the light water reactors, all these reactors will be they will be having huge like they're very expensive, and their procedures and the installment and everything is also very expensive. So right now we will not be going for that. Instead, after long term like as a long term ideas, we have to keep that in mind ki hamari like light water reactors and also small modular reactors also have to be taken care, ठीक है. So हमारी fast breeder is one of a like efficient one and a successful one in India, fast breeder reactors. So till now there is no explosion, touch wood, there is no explosion in India when it comes to the nuclear power. And but whereas other areas, ठीक है, जापान में है और रशिया में है, एंड यूएस ऑल्सो, दे हैव फेस्ड ऑल दोस न्यूक्लियर रिएक्टर explosions. So that is why we are being very considerate about the smaller modular reactors are being tested here, ठीक है. Safety concern is a major thing, ठीक है. Clear till now? Shall we go for the thing once? चलिए. So here international sanctions were imposed on India after its peaceful nuclear test of 1974, which is Pokhran 1, Smiling Buddha, and the Pokhran 2, the operation of Shakti. ये याद रख लीजिए, ठीक है. इसके बाद हमें क्या मिला, sanctions मिला था, where nuclear supply groups, they have like completely stopped their लाइक इनपुट्स जो भी हमें चाहिए यूरेनियम इनपुट्स, उन लोगों ने नहीं दे रहे हैं, रिएक्टर्स नहीं दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे वर डिनाइड कंप्लीटली. सो दीज वर द सैंक्शंस, एंड इवन यूएस हैव पुट सर्टेन सैंक्शंस आल्सो ऑन अस, ठीक है. ये पहले याद रख लेना, ठीक है. द इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर डील व्हिच वाज साइंड इन 2008 आफ्टर मल्टीपल डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड जीनियस डिप्लोमेटिक टॉक्स. 2008 में क्या हो गया था, देयर वर सम रेस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन like flexibilized, ठीक है. So where uranium and of import of uranium and of nuclear power plants, some are critical exceptions. So यहाँ पर exceptions क्या क्या है, civil nuclear technology के लिए you can import the uranium and also the reactors and the technology, but not the enrichment. अभी तक इंडिया के लिए वो restriction अभी भी है, enrichment uranium will not be provided, क्योंकि enrichment uranium that will be using only in nuclear weapons, ठीक है, वो हमें नहीं मिलेगा.
That is the exception. The free import of natural uranium has enabled India to grow its nuclear program. Negotiations with the major western nuclear power plant suppliers were started but had to be given up as their plans were far too expensive. So हमारे पास वो न्यूक्लियर प्लांट्स मिलने लगे लेकिन दैट वाज टू एक्सपेंसिव. सो रशियन बेस्ड एंड फ्रांस बेस्ड हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी आर हैविंग इट, बट मेजरली वी हैव गिवन अप बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंसिव नेचर. ठीक है. सो यहाँ पर इन लोगों ने बात कर रहे हैं होम ग्राउंड न्यूक्लियर एडवांटेज, जहां पर एज आई हैव टोल्ड यू देन प्राइम मिनिस्टर एंड हमारी इंडियाज न्यूक्लियर फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर technology, Homi J Baba, okay, they both have talked and they have created मतलब वहां पर they have given the route for nuclear program. फिर nuclear program के बाद क्या किया इन्होंने 1978 में, if I'm not wrong, नहीं इसके पहले ही है, okay, 1948 में they have created the atomic energy commission, okay, atomic energy commission, and even they have gone for in 1950 I think 1957 if I'm not wrong, okay, 1957 or 1958. At that time we have gone for another association also where the atomic energy and the nuclear energy will be like there is a separate board have been created. Okay. So that is what the thing is like. So the Atomic Energy Commission and Indian firms, the unit size of India's nuclear power plants went up to 200 megawatt to 500 megawatt. But now 700 megawatt units have been developed. So 4 units are under construction and another 10 are being developed. ये याद रख लेना, indigenous product है हमारी, indigenous production है, which is nuclear reactors we are developing, indigenously we are developing, we are not getting from any other country. ठीक है. So this is what the major thing. 4 units are under construction, right? India now makes the cheapest nuclear power plants in the world, costing approximately $1,700 per kilowatt. The South Korean plants cost more, around $2,200 per kilowatt. ठीक है. So this is what the major thing. So India में 1,700 में हम $1,700 में 1 kilowatt हम कर रहे हैं electricity production, okay, but when it comes to the Korea it is 2,200, and when it comes to France it is 5,500, and US में 15,000. so it is low cost. हमारी इंडिया पे it is being cheaper के बदल affordable and you can say it as much low cost आप बोल सकते हैं. ठीक है. instead of cheaper you can go for that term. ठीक है. चलिए. so इसके अलावा क्या हो गया था, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का वो मार्केट है दैट इज बीइंग एक्सटेंडेड. एज आई हैव टोल्ड यू, एआई में भी काम आ जाता है बिकॉज डेटा सेंटर्स में दे नीड ह्यूज नंबर ऑफ पावर्स. सो दे हैव बीन लाइक वी कैन in case if we are developing all those things, okay, nuclear reactors produce electricity, AI data centers अगर इंडिया में हम डेवलप कर रहे हैं तो we can use this energy there, and industrial areas. so धीरे 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 क्या कर सकते हैं, cleaner energy में हम आ सकते हैं, and we can keep the coal for time being at a point of time, okay. कुछ दिनों के बाद कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम हटा सकते हैं. यही है मेजर कंसर्न. ठीक है. सो द लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी एज इट्स 500 megawatt commercial fast breeder reactor is getting commissioned after overcoming many difficult challenges. so हमारी fast breeder where I have told you they will be changing the plutonium into thorium. ठीक है. चलिए. So today India makes pressurized heavy water reactors which use natural uranium as fuel, and light water reactors as use enriched uranium, ये हमारे लिए मना है, as fuel, and are based on uranium enrichment technology which is more widely used in the world. ठीक है. India should try and develop its own light water reactors, especially as the nuclear supply group's waiver permanently prohibits the transfer of enrichment and reprocessing technology to India. As I have told you, this is the major thing that we are talking about. light water reactors के लिए हमारी enrichment यूरेनियम चाहिए, लेकिन the nuclear supply groups they have completely denied India के लिए enriched uranium हम नहीं देंगे. so what we have to do, the author is suggesting we have to go for indigenous development of light water reactors. ठीक है. अभी समझ आया. ठीक है. then the next one is about scaling up, staying self reliant. so scaling up and self reliant क्या है, हमारी pressurized heavy water reactors को
और भी प्रोडक्शन करना है, और भी इसको हमें मैन्युफैक्चर करके वी हैव टू लाइक सेंड इट इन द मार्केट, ठीक है। सो ये हमारी स्केलिंग अप है। स्टेइंग सेल्फ रिलायंट, एज आई हैव टोल्ड यू, 2047 में हमारी 100 गीगावाट का वो एम्बिशन हमें अटेंड करना पड़ेगा फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या करनी है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जाना पड़ेगा, जहां पर वी आर नॉट completely hand overing the things to private, instead the investment and also the requirements and the procurements, all these things will be taken care by the private part, and also private companies, and also the public companies will be taking care of its documentation and the legalities, ठीक है। So this is the private public partnership we are looking for in the nuclear technology. So like joint ventures, okay, venture capitals, all these people, when there's a private investment is coming up, the production, the scale up will be rapid, it will grow rapidly, ठीक है। So funds आते जा रहे हैं, एक जहां फंड आ रहे हैं, दूसरा जहां लीगलिटीज हम सॉर्ट करते जा रहे हैं, तो देन इट विल बी इजी फॉर इंडिया टू अक्वायर ऑल दोस लाइक विशंस, ओके। सो 2047 में हम हमारी aimed power supply हम ले सकते हैं, ठीक है। So that is what they have talked about completely here. Bringing in technology, streams and equipments which will give India for more expensive electricity should not merit serious consideration, ठीक है। So यहाँ पर small modular reactors के बारे में इन्होंने बात किया था। To meet the enormous dictated power demands of artificial intelligence data centers, small modular reactors are being considered as a solution in the West. However, the designs remain under development with commercial deployment, okay, yet to begin. So जहाँ पर everybody is under the ठीक है, so everybody is under this, okay, everybody is under the like they are trying to identify, they are in the development stages, not anyone achieved the small modular reactors, but now it is time for India also to go for it. But we have to keep that in mind, India should not become a testing area for these small modular reactors, okay, that is what they have talked about here. Smaller unit size to suit emerging market needs can also be developed domestically in partnership between the AEC, Atomic Energy Commission, and Indian firms, okay. So the market for SMRs in India would be a bilateral contractual matter between the generator and buyer. From a regulatory perspective, there would be merit in taking the view that a foreign designed SMR plant should have operated satisfactorily for a few years before being deployed in India. There would be little justification for an untested SMR being developed elsewhere, being first deployed experimentally in India. That is what they are talking about. कहीं और इन लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर करके पहले दे हैव टू टेस्ट ओवर देयर एंड दे हैव टू ब्रिंग इट हियर। अगर वो नहीं हो रहा, दे कैन नॉट लाइक डेवलप समवेयर एल्स, एंड this is India should not be a testing field. That is what they are talking about here. Ambition needs caution. So here they are talking about the safety things, okay, and also so far we have a good number of like safety concerns and everything. So rapid expansion के साथ साथ हमें क्या करनी है, we have to focus on our development, okay, indigenous development, design and manufacture things, ठीक है। Clear till now? If there is any doubt, please let me know. ठीक है, if there is any other doubt, please let me know. Otherwise, we will wind up the session. ठीक है, होप द टॉपिक्स आर क्लियर, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए। एज आई हैव टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अकाउंटेबिलिटी का आर्टिकल है, प्लीज डू रीड द आर्ग्यूमेंट्स अलोन, जस्ट think about it what can be done further, but don't reflect this in your answers, ठीक है। चलिए, we will meet in the next session. Till then, thank you so much. Thank you for joining. Have a good day.